हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ग्रोवर जाम्पा वाइनयार्ड जा रहे हैं। पेरेंट्स भी है, मेरे पेरेंट्स भी है। तो हम लोग 6 o'clock उठ गए थे, 8 o'clock को निकलने का सोचे हैं। 10:30 का स्लॉट हम लोग बुक किए हुए। कैब आ गया है, हम लोग सब रेडी हो गए। अभी 7:55 हो गया है, अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को आज का सीनरीज दिखाती हूँ। ओके, हम लोग यहाँ डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। मम्मी है, पापा है। ये एंट्री, यहाँ से चल के जाना है। आधार नहीं उड़ा, उससे पूछना पड़ेगा। ये कार में हम लोग आए हैं, ये हमारा ड्राइवर है। यहाँ से एंट्री किए हैं, दूर से दर। बहुत मज़ा आ रहा है, इतना ग्रीनरी देख के बहुत शांति मिलती है मन को। സ്മോൾ ഫിഷ് അതുകൊണ്ട് ഉള്ളില് കുഞ്ഞി സ്മോൾ ഫിഷ്. देखिए गाइस, मेरा नया मूव कैसा दिख रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा, कैसा लग रहा है अम्मा? चकाचक कैसा लग रहा है? क्या है?
क्रीपर्स, अभी एक वाइन टूर स्टार्ट हो गया है. अब मुझे कुछ कुछ एक्साइटिंग दिखेगा तो मैं उसको लेती हूँ. We should be. So we start with the wine glasses. Every wine glass has 4 parts: base, stem, bowl, lip. The first wine glass over here is the sparkling wine glass, also known as the flute. So why is it shaped like this? Because the sparkling wine contains the bubbles, right? So we give them less surface here for them to escape. Number 1. Number 2, this shape guides the aromas to your nose. The bubble contains aromas. When they rise to the nose, you get the aromas properly. So this is known as the flute. If you drink champagne out of it, we know as the champagne flute. Next wine glass over here is the white of the rosé wine glass, a bit wide on the top. Why? Because you have to swirl the wine at least for 10 to 15 seconds. When you swirl the wine, you'll see a bit of oxygen will enter, react with the wine and open it up. Means the aromas will become more prominent, right? So this will open up, but not as much as compared to your red wine glass. This one, the widest on top. This one, the longer you swirl a red wine, the better aromas you get, right? So if you go to a Michelin star restaurant, order an expensive red wine, they'll first give a decanter in the middle, pour the red wine inside, swirl it around and keep it there for another 40 minutes to an hour for the wine to breathe. When the wine breathes, it opens up beautifully. You can get each and every notes out of it, and also the flavor enhances. Over here, we don't have that much of time to wait around for 1 hour for one wine. That is why we swirl the wine for maximum 15 to 20 seconds, right? So everyone, can you show me how do you hold a red wine glass? Red wine. What's the name? Okay, I can see some people over here are holding the glass like this. Wrong. That's completely wrong. You never, yeah, that's correct. So, you never hold your wine glass by the bowl like this because you're transferring your heat from your palm to your wine, right? So, what happens? Every wine over here has its own service temperature. Sparkling wine over here being 6 to 8 degrees Celsius. For the whites and roses, 8 to 10 degrees Celsius. And for the red, 16 to 18 degrees Celsius. So, if you're holding it by the bowl like this, you're warming it up by your body heat, right? So, unless you're living in a colder climate country like Russia, Canada, US, then you can hold it like this, not an issue, to maintain the temperature of the body. Right? In India, it's already hot, so not required. So always hold your wine glasses, all of them, by the stem, never by the throat. Okay. So one last thing before we start the tasting session, we follow 5 S's of tasting. Number 1 being see, we check the color of the wine. Number 2, swirl. Number 3, smell. Number 4, sip. And number 5, everyone's favorite, swirl. Right? Over here, I can't swallow the wine. 3 sessions a day, I'm just on the floor for the wine. So that's only have to spit it out. Right? So now we'll be starting with the first wine in the collection, the swirling. Anyone speaks a bit of French? Vous parlez français? Je parle un peu. Un peu français? Okay. So what does soirée mean? A party. That's soirée. Soirée means I don't know. evening. And brut means dry. So what happens if you're buying a wine in the market and on the label it's mentioned as brut? It means it's a dry wine. What is a dry wine? Dry wine is anything that is basically very little in residual sugar inside. Maximum 1 to 4 grams of sugar per liter. So what happens when you drink that wine, you'll see your mouth will start to salivate a lot. Right, this one over here has only 2 to 3 grams of sugar per liter. So when you drink this wine, your mouth will start to salivate a lot. Right, number 1. Number 2, over here because of the grape variety which you use, being around 2 to 3 grams of sugar per liter. Right. So we'll wait for everyone to get the wines and then we'll start with the first step. Block grape variety. This is your first white wine. So alcohol percentage has bumped up. Now previously it was how much percent of alcohol? Right. That is the color profile of this one. Now what is next step? Take a shot flip and swirl the wine for 10 seconds. Okay, smell the wine. What do we get? It's very fruity, right? No grape varieties. This one has 2 different grape varieties: Cabernet Sauvignon for 60% and 40% for the Shiraz. Why are we blending these 2 grape varieties? Because Cabernet Sauvignon should give that established in the 1988. This is the first wine introduced to us in the market in the year 1992. Right. So for this one we have won several decanter awards for this one. International awards, 17 decanter awards for this one.
So this is the same wine which you tasted right now, the Cabernet Shiraz, just aged in the French wood barrel for 6 months. Right, so this is the only aged wine we will be tasting. Right, alcohol percentage remains the same, everything is the same, the sugar content, alcohol percentage, everything is the same. But what is the difference when you age a wine? We'll see right now. Okay, so we'll just wait for everyone to get the wines, and we'll start with the first one. So check the color. What do we get? Color profile. This is more like a blood red kind of color. Blood red kind of color, and the trigger of it is a slightly more visible because 2021 batch. That's all. Yes. 21 batch. Right? 2021 batch. So you can see the color being much more visible than the previous one. Now take a short sniff and swirl the wine for 15 seconds. Why we swirl actually? Swirl to open up. Like it's reacting with the oxygen over here and opening up. Not much less. Otherwise, it's concentrated. You have to open it. And for like a proper unfiltered bottle of wine, those ones you can keep it in a decanter. In a decanter at least for 40 minutes or like an hour. Wine's open. If you take a unfiltered bottle of wine like a signet wine over here right now, take it in a glass, drink one sip, you'll see the flavor over here. Then keep it outside like at least for around, I'll say 15 to 20 minutes. Again take a sip. You'll see it open up more. Again after 10 minutes you keep it open, it will evolve. Every time it will evolve. Right? Not for these ones. हम लोग का टूर हो गया है पर वहाँ पे अलाउड नहीं है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, इसलिए मैं कुछ ले नहीं पाई हूँ। लेकिन जो जो बाहर मैं दिखा सकती हूँ वो मैं दिखाने का सोच रही हूँ। तो ये यहाँ से हम लोग का टूर स्टार्ट हुआ एक्चुअली। ये 2 मशीन्स है। ये 2 मशीन से वाइट ग्रेप्स और ग्रीन ग्रेप्स या ब्लैक ग्रेप्स को उसके स्किन्स को निकाल के उसको फ्रेश करते हैं। उसके बाद वो वाले मशीन में उसका कुछ प्रोसेस होता है, फिर वहाँ पे अंदर जाने के बाद उसको फ़िल्टर करते हैं। वहाँ से अंदर जाने के बाद हम लोग को मैंने जहाँ दिखाया आप लोग को वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को मना कर दिए, फ़ोटो नहीं ले सकते बोले। तो अभी पूरा फैक्ट्री का टूर हो चुका है। यहाँ पे वाइनयार्ड पास में ही है, यहाँ इन लोग का वाइनयार्ड 1.4 किलोमीटर से यहाँ से। तो हम लोग खाना वाना खाने के बाद वहाँ एक बार थोड़ा घूमने जाने का सोच रहे हैं और फिर टेस्टिंग भी हो गया। 6 वैराइटीज़ ऑफ वाइन टेस्ट करवाए। अगर तुमको वाइन टेस्टिंग और फैक्ट्री का टूर चाहिए तो 1000 प्लस टैक्सेस है। सिर्फ वाइन का टूर चाहिए तो 500 प्लस टैक्सेस है। तो ऐसे सब रेट्स है यहाँ पे। एक अच्छा गेट अवे है एक्चुअली फैमिली के साथ। अगर आप लोग डिसाइड रिगार्डिंग वाइन्स और उसका टेस्ट और क्या क्या फूड आइटम्स सूट करता है, कौन कौन से सॉर्ट ऑफ वाइन्स के साथ, वो सब का आप लोग को अच्छा एक नॉलेज मिल जाएगा। बहुत अच्छा गेट अवे था फैमिली के साथ। लेकिन फूड थोड़ा क्या बोलना चाहिए, थोड़ा फॉरेन स्टाइल है फूड। जैसे आप लोग को बेसिक चपाती, आप लोग को बेसिक चपाती और जैसे हम लोग इंडियन स्टाइल खाते हैं जो पेरेंट्स को पसंद है उस टाइप का यहाँ पे उतना नहीं मिलेगा। तो हम लोग तो 1 प्लेट ऑर्डर कर लिए मैं और यादव खाने के लिए। मम्मी पापा को हम कहीं बाहर से ही देखेंगे खाने का। तो ऐसा सब है। अभी फूड आके मैं आपको दिखाती हूँ और कुछ एक्साइटिंग मिलेगा तो दिखाती हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे बादाम का भी पेड़ है कहीं पास में। हाँ, ये बादाम का पेड़ तो वहाँ से निकला है एक। अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से अगर वाइन लेंगे तो 10% डिस्काउंट है, तो हम लोग कुछ वाइन्स का शॉपिंग कर ले सोच रहे हैं। देखते हैं अभी क्या हम लोग लेंगे। हम लोग लिए हैं 10% डिस्काउंट में मिला है। कैसा लग रहा है यादव इधर? अच्छा है। मेरा प्लान कैसा था वाइनयार्ड घूमने का? मैं अच्चन को भी दिखा देती हूँ। ये देवाला लिए। कैसा लगा ट्रिप? 21 का है। कैसे लगा मैं ट्रिप? खा लिए
हम लोग एक शेपर्ड्स पाई ऑर्डर किए और मैं और यादव शेयर करके खा लिए। ठीक था, टेस्टी है बहुत, लेकिन क्वांटिटी सब मतलब अगर आप लोग पूरा थोड़ा कम उसमें रीज़नेबल रेट में अगर आप लोग अच्छे से खाना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक नहीं है ये तो। लेकिन हम लोग खा लिए, हम लोग को हाँ बार फूड हम लोग खाने का मन था तो खा लिए, और थोड़ा भूख लग रहा था तो इसलिए फटाफट खा लिए, तब मैं वीडियो नहीं ले पाई। तो अभी हम लोग वो वाइनयार्ड का जो लैंड है उसको देखने जा रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। वाइनयार्ड पहुँच गए हैं, ये है वाइनयार्ड। जैसे वो बताए जो इंस्ट्रक्टर है वो बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं सब वो निकाल दिए वो लोग अभी के लिए, 2 मंथ्स पहले निकाल दिए थे, तो इसीलिए अभी तो नहीं है, पूरा खाली है। चल अगले पर वो नंदी हिल से शायद। क्लाउड्स देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं।